Om. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahabhiryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Om Sri Gurubhyo Namaha. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Sri Saraswatyai Namaha. Om Namah Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. I hope you can remember the chanting style or the chanting procedure of Sahana Vavatu. Or we will revise one time only about Sahana Vavatu. Please chant after me. Please chant after me. But muting the phone or laptop. Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karvavahai. Sahaviryam Karvavahai. Tejasvinavadhitamastu. Tejasvinavadhitamastu. Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Once more, do you need? If you need, please raise your hand. Then I can understand. Okay. That is the problem of online class, you know. Okay. So chant after me. And every day if we chant, it will be nicely graspable. अगर हर रोज हम लोग इसको सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो सहज रूप से हम लोग अपना सकते हैं इस ट्यून को, इस सुर को. ओम सहना भवतु. ओम सहना भवतु. सहनौ भुनक्तु. सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं करवावहै. सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु.
तेजस्विनावधेत्तमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. So whenever Visarga will follow Sakara, any Sakara, either it's Sakara means Saraswati Sakara or Shiva Shakara or Talavya Sakara, or Shakara means Shanmukha Sakara, the Visargas pronunciation will be changed into that Shakara or Sakara. Like here, Shantihi means Visarga, then Shantihi, then Shantihi. So after Visarga, there is Shanti. So Visarga's pronunciation will be like Shakara. So you have seen Om Shantish, Shantish, Shantihi. Why this one? Because the ending Visarga, there is nothing else afterwards. So their Visarga's pronunciation will be like Ha, Hakara. And how the Hakara will be pronounced? According to the vowel it is preceded by. So here Santihi. So the last line I will chant. Okay. So the thing is, first cover is up that Shantihi, Shantihi, Shantihi. Actually it is written Shanti, Visarga, Shanti, Visarga, Shanti, Visarga. But in two Shantis, there is Visarga in between, and after that Shakara is there. So Visarga's pronunciation will be changed into Shakara. Om Shantish Shantish. But the last one, when Visarga is the ending letter, then Visarga's pronunciation will be like Ha, and Ha will take the preceding vowels. उसके पहले जो vowel है उसके हिसाब से हा का उच्चारण होगा. Like here शांति ई, छोटा ई है, इसके लिए हा का उच्चारण होगा ही, शांति ही. The same thing is applied in any text written in Sanskrit. Either it is Tattvabodha or Atmabodha or any chanting or Upanishad chanting or Gita chanting, anything, Lalita Sahasranam, Vishnu Sahasranam, what about you chant? The theory is same. The water, you mix with the water, mix with the milk, mix with the sabji. What about you do? The water is H2O. The basic formula is like that. So chanting's basic theory I am teaching you. What will be applicable in all the chanting? What about you do? Chanting should be proper and correct. Okay. So now one thing I just want to mention. Some students wrote that if I discuss about the meaning of the mantra we chant, it's very wonderful. It's Sahana Vavatu. Sahana Vavatu means
सर प्लीज एक चीज बोलिएगा, छोटी ई की मात्रा होगी पहले तो ही होगा, शांति ही, पर बड़ी ई की मात्रा हुई तो बड़ी नहीं होता। और होता ही नहीं है। होता एक चीज आपको पहले समझना पड़ेगा कि जब एंडिंग लेटर होता है, लाइक ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। The ending letter, whether it is short or long, the pronunciation will be long. Okay. Always the pronunciation will be long. Now, Sahana Vavatu meaning I will explain, just small. This is not the Vedanta class. Om, together may we two move in our studies, the teacher and the students. सहना भवतु, हम गुरु और शिष्य दोनों एक साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पथ में समान रूप से हम लोग पढ़ सके। सहनौ भुनक्तु, together may we two relish our studies. Here relish our studies means teacher and the students. भुनक्तु, भोग से ये शब्द आता है। ये जो विद्या अर्जन का जो फल होता है, ये फल समान रूप से गुरु और शिष्य के ऊपर वर्षित हो। सह वीर्यम करवावहै, वीर्य means the vigor, the strength, the vitality side. So together may we perform with full vigor, with deep concentration. सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों के कंसंट्रेशन, लक्ष्य एक हो, भावना एक हो, विचार एक हो, दृष्टि एक हो। अब जिस पथ में हो, जिस मत में हो, लेकिन जब अब आचार्य के साथ बैठेंगे पढ़ने के लिए, प्लीज लीव योर कंडीशनिंग्स दैट I am so and so, I am wife of someone else, I am mother of someone else, or I am so and so, I am the daughter of so and so, or I know a lot, I have studied in Sanskrit, I have studied all the things. Then only the teaching and learning procedure will be successful. Samanam mantram in Rig Veda, one mantra is there. If we get time, it's a wonderful. Om Vang Me Manasi Pratishtitam. So it's a wonderful mantra. I will teach you afterwards. So the thing is, our mind, our thinking, our vision, everything should be aligned. हमारा चिंता, भावना, दृष्टि सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए। और हम जो भी हो इन पर्सनल लाइफ, सब छोड़ के आचार्य के पास आना पड़ता है, तब शिक्षण और शिक्षा फलप्रसू होता है। सो सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, together may what has been studied
by us be filled with brilliance, Tejasvi, now avadhi tamastu. May it not give rise to hostility due to lack of understanding. Ma vidvishavahai. It's a prayer of teacher and students both. Both are praying for their selves and others, their own self and others. This is a wonderful prayer. Before studying, we should do that. And all other invocation mantras we chant, that you please see in the YouTube, Divakar Chaitanya, Divakar. Their definitions of Vedanta in first class and in second class, I explained about invocation mantra. So, in this here, I'm discussing about the mantra. Mainly, I will explain the ending mantra, because in chanting class, I don't utter so much invocation mantras, but in Vedanta class, it's a must thing. So I think you have understood that this is the mantra. ये एक ऐसा ही मंत्र है जो गुरु शिष्य एक साथ उच्चारण करते हैं. विद्या अगर गुरु ना रहे तो शिष्य का कोई भूमिका नहीं होता, और अगर शिष्य भी नहीं रहेगा तो गुरु का भूमिका नहीं होता है. बच्चा होने से पहले कोई बाप नहीं बनता. So it's a son and father is a interrelative relationship, upadhi, condition. So ये गुरु शिष्य भी ऐसा ही है. इसके मतलब साधक का साधना नहीं रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन जब गुरु आचार्य पद आ रहा है वो शिष्य के अनुसार है. सो इधर परमेश्वर की प्रति प्रार्थना, ये सारे जो विद्या, इसका फल सबके ऊपर, दोनों के ऊपर समान रूप से आए, हम दोनों समान रूप से इसको एंजॉय कर सके, आनंद ले सके इसका. हम इसका जो तेज, इसका जो ब्रिलियंस है सबको पास आए. हम लोग का मन, मुख, वाक्य सब एक हो जाए, चिंतन, दृष्टि, एंड हम एक दूसरे से विद्वेष ना करें. क्योंकि अभी ऑनलाइन तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, बाद में हम लोग फिर इकट्ठा होंगे एक जगह पर. तो एक साथ होने से ही लगता है जो आचार्य इस स्टूडेंट को ज्यादा ध्यान दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे भावना आता है आचार्य के बारे. बट इन वेदांत क्लास, इफ यू प्लीज स्टडी, देयर आई डिस्कस inch after inch. So there I told, it's a mental projection. It's a mental projection that we think according to us. In what way Acharya will teach his students? Because Acharya is he who knows the nook and corner of the students. He knows the nerves of every student. शिक्षक और शिक्षार्थी, विद्यार्थी का संबंध नाड़ी का संबंध है. तो उसमें ऐसे आ जाता है, इसलिए मां विद्विषावहै. Today we will learn one prayer, one mantra, what we generally utter after all classes. We should pray this mantra in the morning, in evening also, for the betterment of the society, for the betterment
of us, betterment of our family also. Please chant with me, or if you have Book of Hymns, page number 6 in Sanskrit, page number 8 in transliteration, because many of you may be from South India or some place who doesn't know Devanagari script. For them, page number 8, transliteration, the same thing is written in English. So please chant with me. Means not with me, after me. Om Swasti Prajabhyah. Om Swasti Prajabhyah. Paripalayantam. Paripalayantam. Now one thing, if Visarga is following Pakara or Phakara, P or PH, then Visarga's pronunciation will be fa, not pa, like fruit, fa. So it will be Swasti Prajabhyah Paripalayantam. Swasti Prajabhyah Paripalayantam. Understood? It was Swasti Prajabhyah, but when we will chant together, Visarga's pronunciation should be changed. So Visarga's pronunciation has been changed into Fakara because Visarga is following Pa, P. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam. Please chant. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam. Nyayena margena mahim mahishaha. Nyayena margena mahim mahishaha. Go brahmanebhyah subhamastu nityam. I will repeat everything else. Just chant now. I will repeat. Go brahmanebhyah subhamastu nityam. Go brahmanebhyah subhamastu nityam. Here you will find in book, Go brahmanebhyah. Go brahmanebhyah. So, bhyah, Visarga is there. So, that Visargas will be changed into Shakara because Shubha is there. Go brahmanebhyah shubhamastu nityam. Loka samasta sukhino bhavantu. Here also it is there. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Actually, sukhinaha bhavantu. So lokaha, then samasta is there. So visarga will be lokas, samastas, because sukhina is there. Then visarga, sukhinaha, visarga has changed into okara according to sandhi rule. Sukhino bhavantu.
Again, loka samasta sukhino bhavantu. Kale varshatu parjanyaha. Kale varshatu parjanyaha. Here see, parjanyaha is the last word. So Visarga's chant pronunciation is ha, and it is akara like parjanyaha. Prithvi sasya shalini. Prithvi sasya shalini. Deshoyam क्षोभरहितः. देशोऽयं क्षोभरहितः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. So Brahmanaha, Visarga is changing into Sakara because Santu is there afterwards. Visarga के बाद संतु है, इसलिए विसर्ग की उच्चारण सकार हो जा रहा है. ब्राह्मणा संतु निर्भयाः. ब्राह्मणा संतु निर्भयाः. So let's chant once again, repeat after me, then we will chant together. Okay. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam. न्यायेन मार्गेण महिषाः. न्यायेन मार्गेण महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः. काले वर्षतु पर्जन्यः. पृथिवी सस्यशालिनी. पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं देशोऽयं क्षोभरहितः. क्षोभरहितः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. So let's chant together. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam. न्यायेन मार्गेण महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः. पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. So, what is the meaning? Swasti prajabhyah paripalayantam. It is
May there be well-being to the people. सबका भला हो. न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः. Mahim, Mahi is about king. May the kings rule the earth along the right path. राजा सटीक पथ में प्रजा और देश को परिचालना करे. गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्. May the cattle and the Brahmins, not the Brahmins by caste who are having sacred trade. Brahmins means you, who has sacrificed their worldly desire and work and entertainment and is attending this boring class. Sometimes someone is yawning, I am seeing. So they are Brahmin. So that those Brahmin well-being has been prayed over here. Then Loka samasta sukhino bhavantu. May all the beings, sare praja kitanu kit briksha in all worlds become happy. Sabka sukh ho. Kale varsatu parjanyaha prithvi sasya shalini. Sufficient rain should come in time. Not ativrishti, not anavrishti. Not it is prayed for flood, overflood, or drought. A rational rain should come in time. Prithvi Satsya Shalini, the whole world, not only India or our place, the whole world becomes full of crops. Crops means the wealth. Vedic rishis are praying for everyone else. Deshoyam kshobarahitaha, all the places becomes peace. There is no turbulence, no grabbing nature that others' land has to be grabbed, others' wealth has to be grabbed by hook or crook. There is no purpose. Only we are in peaceful. We are not in peace. We are suffering. So we should make the other sufferings because they are peaceful. So let's start with the land grabbing and start fighting with that. No. Deshoyam kshobarahita. Our mind becomes peaceful, tranquil. Brahmana santu nirbhayaha. Brahman should be fearless. Good people should be fearless. When the good people become afraid, that is the sign of a black age. It is not the black age when the nonsense people or the rude people or demonic people are overpowered. This is the black time when good people are silent because of fear factor. ऐसे नहीं जब खराब लोगों का
धूम धमाका ज्यादा होगा तब वो खराब समय है। खराब समय तो वही है जब अच्छे लोग भय से चुप रहता है। इसलिए इधर प्रार्थना है, ब्राह्मणा संतु निर्भया, गुड पीपल, अच्छे लोग भय रहित हो जाए। ओम शांति शांति शांति। There are three types of disturbances in our life: adhyatmic, adhidaivik, and adhibhautik. One types of hurdles comes from the natural calamities, where there is no control, like earthquake, Amphan, cyclone, like that. Another is Adi Bhautik, created. You are going, dog has just barked. You have nothing to do. Or like corona issues, made in a laboratory in any country, I don't want to mention the name. And for their trial and error and mistakes, the whole world is suffering. Adi Bhauti. And another thing is Adhyatmi. Some people are confused that why I am in so much peace. They ask their peaceful mind also. Adhyatmic problem created by me, unnecessarily created anxiety, doubt, confusion, and we disturb our peace and studies. So those Shanti, Shanti, Shanti. These are the meaning of the prayer we learned today. I will not translate all the prayers, but it will be our part and parcel. It should be this sort of prayers. That is why I just translated it. Hari Om to everyone else. We will meet again on Tuesday. Pray to Lord that as we can learn without obstructions, obstacles and hurdles, or if they come according to our karma, please give us strength as we can resist it. भगवान को प्रार्थना करो कि हमारा शिक्षण प्रणाली ठीक तरीका से, सही तरीका से संपन्न हो सके, निर्विघ्न में, विघ्न रहित होकर। अगर कोई विघ्न आ भी जाए तो भगवान मुझे ऐसे शक्ति दो जिसे हम लोग उसको पार कर सके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hari Om to everyone else. Hari Om, sir. Hari Om Swami Ji. Hari Om Swami Ji. Hari Om. Sir, I have Guruji, I have a question. May I ask? Hari Om, sir. Yes. Guruji, आपने बोला था ना वो book मंगवाने के लिए. I sent my driver to Chinmay Machine and he's got this book. No. I think you told something. You just say hymns, chanting wala book. What is chanting वाला बोला तो उन्होंने ये book दे दिया. 2 book मैंने मंगवाया था मेरी और मेरी friend के लिए. क्या है? Chinmay Book of Hymns. Yes, the cover may be changed. Cover नहीं लेकिन अंदर में ना सर जो आप करा रहे हैं ना वो इसमें नहीं है और इसमें वो सब नहीं है जो विसर्ग और आप सब बताते हैं ना वो लाइंस बना हुआ
मतलब वो सब नहीं है, हिंदी वाले में वो सब लाइंस बने हुए नहीं है। जैसे जो आपने ये शांत, ये वाला जो एक पेपर आपने दिया था, ये कौन से बुक से है सर? ये मंत्र पुष्पम बाय रामकृष्ण मिशन खार। अच्छा, So तो which one are you following, sir? now for your betterment, because those Ramakrishna Mission book is available in online only. तो ऑनलाइन का आप नाम बोल दीजिए, हम लोग मंगा लेंगे। अमेज़न में है, अमेज़न में। मंत्र पुष्पम by this is by Why Veda? Ramakrishna Mission. Why Ramakrishna Mission? Publication. तो सर आप जो करा रहे हैं अभी तो मैं इस बुक से करा रहा हूँ। तो सर ये वाला ही बुक तो हमको चाहिए। तो ये बुक चिन्मय मिशन में है? हाँ हाँ, ये चिन्मय मिशन का ही बुक है। तो ये बुक मैं चेंज करा सकती हूँ? Of course. ये बुक Of course. तो मैं torn the paper. Then नो ये एकदम नई बुक ही वो लेकर आए हैं। Okay. 2 बुक है, तो आप काइंडली उनको बोल देंगे ये बात कि 2 बुक है, उनको ये बुक दिखाना है, क्योंकि वो गए थे ना उस दिन, तो वहाँ पे कोई भी जो भी थे उन्होंने भूल से ये बुक दे दी। Okay, I will tell. I will. ठीक है ना? Definitely. और सर नाम क्या है बुक का, एक बार फिर से बताएंगे? वो वाला बुक Sacred का? है। Change was Sacred Hymns. आप एक बार काइंडली नंबर दे सकते हैं वहाँ पे कि किसको मैं फोन करूं और उनसे बात करूं जब मेरे ड्राइवर जी जाएं तो? डील करते हैं। या आप अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर तो सबके पास है 9411 हाँ 322 322 642। 642। ठीक है, तो जब वो जाएंगे तो मैं आपसे बात करा दूंगी, तो वो मैं उनको कल भेजूंगी। सर कल चिन्मय मिशन खुला होगा? कल क्या शुक्रवार है? कल सैटरडे है। हाँ रहेगा, भूमेंद्र रहेगा। यस। कितने बजे तक खुला रहेगा सर? शाम को 5-6 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, वहाँ पे किससे बात करनी? भूपेंद्र जी से बात करनी है क्या? कोई भी। थैंक यू गुरुजी, तो मैं उनके साथ भेज करके ये मंगवा। थैंक यू सो मच। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम सर।